मेरा श्याम प्यारा एक साइड और पूरा वर्ल्ड ऑफ गोल्ड एंड ग्लिटर्स एक साइड, बट मैं हमेशा अपने श्याम को ही चुनूंगा। आई सेल दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड, समथिंग इनसाइड मी टोल्ड कि दिस इज कृष्णा। एक इवॉल्व्ड सोल में उनको मोक्ष पाने का ज्यादा इच्छा होता है। व्हाट इज माई पर्पस? ये एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? यू आर गॉड। सुशांत ने एट लीस्ट आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट, जब सक्सेस मिल गया, फेम मिल गया, सब कुछ, मनी, एवरीथिंग, उसने कभी आपको बताया था हाउ ही फेल्ट? उसके लिए पता है क्या मैटर करता था? लव। श्वेता मैम, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। इट्स ऑल माई ऑनर। जब मेरी सिस्टर ने बताया था कि आप भी वेदांता स्टडी कर रहे हो स्वामी सर्वप्रेमानंद जी के साथ यूएस में, आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट। Vedanta and spirituality has completely changed my life. You know, especially as an actor and singer, you get to a point in spirituality when you start to have a little bit of dispassion and you start to ask a lot of questions, a lot of realizations, and you ask yourself, कि life का purpose क्या है? Reality क्या है? Career का purpose क्या है? What am I here for? What is existence in actuality? And for me personally, Sushant, he was and still is a role model for me. He opened my eyes to a world that I never knew was there before. I wanted to ask you, Vedanta or spirituality, what effect did it have on this whole process of you not only grieving and going through all this, but also fighting for justice for Sushant? Well, Vedanta is now life for me. That's what I'm living, that knowledge. And from very early on, as a child too, I was spiritual. I used to meditate, but I didn't know that I'm doing meditation. I'll go to my room, I'll draw curtains, and I'll just sit quietly and I'll get absorbed here. Okay. I don't know what is happening to me. But, later when I started studying about it and stuff, then I got to know that I used to meditate. Yes. As a fourth grader too, I remember I used to write in my diary that I am an Atma. I have to be one with Paramatma. And the only goal of my life is moksha. Self-realization. Self-realization, yes. So that was very clear in my mind. But when you're growing up and you have so much to do with studies and, with career and so much goes on in your life, right? So उस समय आपको life एक तरफ लेके जाता है. And somehow after my marriage, I got the time because when I went to US, I didn't have work visa. So I had all the time in the world where I could just spend it on actually searching for meaning and purpose of my life and really focusing on the questions I had to start with. Like early on, I had these questions. Who am I? Why I am here? What is the purpose of life? So I was able to focus on all that. And then Ramana Maharishi came into my life. And then that was such a eye-opener when I heard it for the first time, that I'm not the body, I'm not the mind, I'm not this ego self, the character I'm playing in the world. It was such a liberation. And after 2007, it was always like I was into this. So this is what I was living. But when Bhai's incident happened in 2020, it was too much to take in. The whole thing, the way it played out, so much of media outpour, it was too much to take in, right? So much attention, so many news channels just talking about Bhai, like 24/7. And everybody, and if you want to heal from something, some wound, you have to leave it. You don't have to keep touching it or playing with it. Otherwise, that wound will never heal. And I could see that because there was so much attention on this case. And every time I met someone, they wanted to talk about Sushant.
And that just brought up his memories, and it was difficult to heal. So I decided that I'm going to go completely off-grid to a Buddhist hermitage for a month, where I won't meet anybody, I won't be connected to internet or anything like that, and I can just do my pure sadhana. So I got a kutter, sadhana kutter. It's a cabin, and I was there for a month, and it was a wonderful experience. So over there, they make it a point that you don't have to meet anybody. You can just do your sadhana. You don't even have to see anybody else. Okay? So when you see other people, what happens is that, like when I'm seeing you right now, you are looking into my eyes, right? You are reminding me that I am this character. I am Shweta, right? And now I have to play being this, right? When you're all alone in the forest, in a cabin, just meditating, and when you're not interacting with anybody else, you get into a state where you don't have to act being Shweta anymore. You just see plants and forest and trees and animals, and then they don't remind you. It's a liberating experience. So I went through that, and I had many breakthrough experience during that time. And because of the insight, because of the practice, I got the strength to kind of continue with life and with everything that was happening around me. कितनी देर के लिए आपने ये वैसे किया था ये isolation? पहले 1 month के लिए. Then again, I went after 6 months for 1 month, another 1 month. So I did it 4 times. Wow. And again, I'm going next month. July, पूरा July वहाँ पे रहूँगी. No, I definitely resonate with that because I did Vipassana in upstate New York, and it was only 10 days. But जो आप बोल रहे हो कि like naturally like वहाँ एक rule था कि noble silence. We were still interacting with us. We would still see each other, but noble silence was very, very important. And most of the times, पूरा दिन we would just be spending meditating only. And it's like, you're right, Kay, like that in real life, even though I'm an actor by profession, but in real life, we're all just kind of playing a role. We're all some actors. We identify that, oh, I'm Aryan, and we're going out and we're playing this role as Aryan Singh Arora. Oh, I'm this, I identify myself as this, I'm this years old, I've scored this, etc., etc., etc. And we walk with these kind of like, not only just a physical costume, but that identity aspect as well. And somehow like that aspect of isolation, gyan and experience kind of puts you in that stage, John, like you actually feel, at least for me personally, Vipassana made me realize a lot within myself, a lot of self-realization. But a few weeks after Vipassana, I had a near-death experience. And that was the first time because like I never went that deep into gyan. I never read that many books or that many scriptures, but I had this experience of oneness when I became unconscious and died for about 10 to 15 seconds. Apparently it was an asthma attack. मैं कभी diagnosed तो नहीं था asthma के साथ, but I was reading a few scripts and doing some auditions with some friends, and my lungs basically collapsed, and luckily hospital came, but a little bit late. And I walked down the stairs from my second floor of the house in New Jersey only, and जब मैं बाहर गया था, I completely passed out. I could not breathe at all, and I saw a white light, and I can't describe it because it wasn't knowledge at all, but it was just realization that I'm here every single day playing a role, and I'm identifying myself as this body, as Aryan, but in reality, sab ek hai. We're all one. And since that day, my actual journey started. My mom introduced me to Swami Sarvapriyananda Ji. I started going to the Vedanta Society of New York, started diving deeper, deeper and deeper. And yeah, I totally agree with you. It changes your life completely. Can you shed a little bit light on your experience? Jo aap bol rahe ho कि you had a lot of experiences. Was it experiences of oneness? Can you shed a little bit of light on that? Sure. So, what you said about Vipassana, I have done many Vipassana sessions too. And this, what I do, Samatha, it's like 2 wings of Buddhism. One is Vipassana. Vipassana is like insight.
Samatha is calm abiding. You have to stay with the insight so that it penetrates deep in you. It becomes you. It becomes a part of you. Okay? So what happens in Vipassana? We have to do Anapana. Anapana for 3 days. So it actually helps us improve our concentration, the focus, the one-pointedness, right? Once we have the focus, one-pointedness, we put it everywhere on our body, the different sensations that we are experiencing, and we watch it. Whatever is rising, we just watch it, right? And then we see that anything that rises, it subsides too. It goes away. So nothing lasts forever. So this is the insight that everything is transient, temporary. And the one watching it, it's always there. But Vipassana, we are not taught that. But there is something called Bhanga state. Bhanga state. So while we are doing it, while we are doing the practice, this watching the sensation practice and being equanimous, not chasing the pleasurable sensation and not running away from the painful sensations, right? राग द्वेष को नहीं हम follow करते हैं उस समय. हम बस एक equanimous way में सब कुछ watch करते हैं साक्षी भाव में. जब आप वो अच्छे से करते हो तो आप एक state में घुसते हो, उसको कहते हैं भंगा state. The whole body starts to, dissolve. And you get, so for me, this has happened during Vipassana too. So I get into a state where I don't feel my body at all. It's a very, very blissful state. And during Samatha practice, look, for me, I practice Ramana Maharishi's method. So I always see from where this sense of I am is rising. So right now, if I tell you, Aryan, do you exist? Are you there? What would you say? Yes, I'm here in this moment. Yes, you are there, right? Do you have to see? Close your eyes. And if I ask you again, are you there? Do you have to see your body to say that I am there? Not at all. Okay. Then if I tell you, don't access your thoughts. Okay? Are you still there? Don't access any thought. Just be thoughtless, in thoughtless state. Are you still there? Yes, right? You don't have to access any thoughts. But you can tell that you are there, right? You just know it. It's inherent to you. Where is that sense of I rising from in the body? So in deep meditation, you use your one-pointed focus, okay? And you go deep and you see from where the sense of I is rising from in the body. And once I was doing that, okay, I'll tell you one of my experiences. So, I have been initiated in Krishna Mantra, okay, in 2013-14. And I had gone to Rishikesh, and Gandhi and I were staying in Rama Ashram during that time. And somebody told us that there is a Rishi Muni just staying in the forest nearby. हाँ, तो हमने decide किया कि हम जाके उनसे मिलेंगे. ऐसी random, किसी ने उनको बताया तक नहीं कि हम मिलने वाले हैं और anything. हम बस cross करके road उनसे मिलने गए. And as we reached there, he was right outside. And he looked at us and he was like, अंदर जाके बैठो. And then when he came inside, he told कि I was waiting for you, looking at me. I was like, but हमने तो बताया ही नहीं था कि हम आ रहे हैं. So that was very strange. Of course, he had, insights. These kind of people, they know things. And then he looked at me. He told a lot of things about me. And most of it was true. अभी तक जितना मेरा life unfold हुआ है, वो सब true हुआ है, जो भी उन्होंने बोला था. And then he initiated me in Krishna Mantra. और उन्होंने बोला ये कृष्णा मंत्र all the time चलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रही हो, just keep repeating it.
तो मंत्र भी होता है ना, जब आप बोल के करते हो, ठीक है, ऑडिबल होता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, बट जब बस मन में करते रहते हो तो दैट इज मोर इफेक्टिव. Same thing he told me, and I used to do it, and I kept doing it for 5 years straight. Okay, and for me the truth has always been that I have always felt this separation from God. Very early on I would feel this. तो मैंने जितना भगवान के लिए आज तक लाइफ में रोया और किसी के लिए नहीं रोई. So I used to feel that separation from God, and somehow that day that got triggered. जिस दिन ये समाधि का एक्सपीरियंस हुआ था. So I was taking a shower, and I was listening to Vinod Agarwal's bhajan, and then he was singing कि मेरा श्याम प्यारा एक साइड और पूरा वर्ल्ड ऑफ गोल्ड एंड ग्लिटर्स एक साइड, बट मैं हमेशा अपने श्याम को ही चुनूंगा. एंड दैट क्रिएटेड सच it was a very, it created a lot of emotions in me, a tornado. Was it hard, this is like going back into reality, like after experiencing that you're not the body? Even with my mom, she's experiencing that, and then she tells us about her experience sometimes she doesn't like to share too much. But how do you get back from that once you realize that yes, we are all the vast, right? The universe is vast, we're all Brahman. How do you get back into reality when every day you're waking up and you're living these aspects of a jiva, you're doing all these things, you're going out in the world, whether it's work or anything, and you're living these aspects where you are the individual, you're doing everything as the individual with the separation कि नहीं, we're not one. तो ये तो पहले इमोशनल अपहीवल था. उस समय तक मैं रो ही रही थी. I was still very much Shweta, and I was crying for God, and I was like कि आपको बुरा नहीं लगता कि मैं आपके लिए इतना रोती हूँ, and you are still being so cruel, and you're not accepting me completely. Why there is still a separation? ये सब रो रही थी, फील कर रही थी. I was still playing Shweta at that time. A bhakt Shweta, but I was still playing Shweta. But then when I went to my meditation room and I sat on my meditation chair, when I got into meditation, I felt this presence of God. I felt a strong presence just dawn there. ठीक है, तो जब मैं मेडिटेशन रूम में गई और अपने मेडिटेशन चेयर पे बैठी, I started meditating, and थोड़ी टाइम में ही I felt this strong presence. मैं डर से आँख नहीं खोली, thinking कि अगर मैं आँख खोलती हूँ तो वो presence चला जाएगा. But something inside me told कि this is Krishna, and I offered him to sit. And then when I did offer him to sit, he was still standing. I felt he's still standing. And then I left my seat for him and moved towards the other side. ठीक है? And then he guided me into meditation, where he actually told me that, divide your body and see from where the sense of I is rising. Okay? So this part, where is the sense of I rising from in the body? And somewhere here in the heart center, I was sucked in completely. So with the one-pointed mind, you just have to stay there for long enough, that sense of I am. And because if you have so much of devotion, love, then you want to stay there because you know that is the God self in you, right? And you want to be united with that. और जैसे रमन महर्षि ने exactly कहा है ना कि जब आप trace करते हो I am को, there is something higher that comes up and sucks you in. Exactly the same thing happens. Wow. Did it change your perspective like after that experience? Like उसके बाद क्या हुआ था? Like did that inspire you to write your book as well, or? Of course, that was, I have written about that Samadhi experience in my book. Yeah. But that is not the only thing that inspired me to write this book. It was mostly because I felt that there are so many people suffering. Those people who lose their loved ones, they also suffer. And because spirituality has helped me to come out of it, if I can show them the way,
and give them a helping hand. That was the reason I wrote this book. And somehow I read this chapter on universal responsibility when I was in 1 month meditation. तब मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बस अकेले खुश हो रहे हो, हैप्पी हो, स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट कर रहे हो, आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू. ओके, सो द टाइटल इज़ पेन अ पोर्टल टू एनलाइटनमेंट. तो आप थोड़ा बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो बुक के बारे में, क्या लाइक आपका एक तो पर्पस क्या है बुक लिखने का, एंड ऑल्सो थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर सकते हो ऑडियंस को a little bit. देखो आर्यन, हम सब सारे ह्यूमंस को सफ़र करना पड़ता है, एंड आई डोंट थिंक it's by accident. It's actually by design. God has created it that way, that as humans, as identity, we suffer and we fail. So that when we fail in externalities, external world, and even after achieving things, if we fail, in a way, like success in itself becomes failure for you, then you start asking this question that who am I? Why am I here? What is it that will really satisfy me in long run, right? What is that, eternal happiness? Happiness. I actually, it is so weird. आपने literally सोच लिया मैं क्या बोलने वाला था. नहीं, मैं happiness के बारे में बात करने वाला था. जैसे coming from New York, not only in my career, लेकिन everybody, at least मेरे जो friend groups थे and everything, वो सोचते कि happiness एक destination है, कि काम करोगे, सक्सेस मिलेगा, थोड़ा फेम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो मैं खुश हूँगा, तब मुझे प्रॉपर ब्लिस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, खुशी मिलेगी. लेकिन क्या वो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है? हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन होती है, हैप्पीनेस एक विद इन अस होती है, लाइक परमानेंटली, लाइक विद इन अस एंड इन दैट मोमेंट. हैप्पीनेस, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? Happiness, I feel, is a misnomer. It is something that we are chasing, but we never really get to it, because the concept of happiness that we have in our mind is in itself flawed. Okay? So happiness क्या? देखो हमारे scriptures में 4 पुरुषार्थ का बात किया गया है. एक है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म, और चौथा है मोक्ष. इससे कहते हैं हमें हैप्पीनेस मिलेगा. काम क्या है? काम फ्रॉम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी टू एन्जॉइंग चॉकलेट कुकी टू रीडिंग अ वेरी फाइन बुक, वर्ल्डली नॉलेज, ये सब काम में आता है. बट हाउ मच विल यू चेस प्लेजर? क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होता है? तुमने आज कॉफ़ी पी लिया, तुमने आज कोई मूवी देख लिया, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, राइट? आज अभी को हैप्पीनेस फील हुआ, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, राइट? तो वो लास्ट नहीं करता है ज़्यादा टाइम के लिए. एंड द मोर यू सीक प्लेजर, द मोर यू गेट इट. तुम्हारे सेंसेस भी वीक हो जाते हैं और तुम ज़्यादा इनकेपेबिलिटी आ जाती है एंजॉय करने का वही प्लेजर सेम वे में. तो जैसे तुमने आइसक्रीम खाया, एक बोल ऑफ आइसक्रीम खाया, उसके बाद फिर दूसरा बोल खाया, फिर तीसरा बोल खाया, फिर चौथा बोल खाया. Will you derive the same amount of pleasure by eating the 4th one? Maybe the 5th one, if I offer, you will just vomit. You'll be like, that's it, I'm done, right? तो प्लेजर सीख करने का एक बैंडविथ होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं सीख कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जब हम इनफ प्लेजर सीख कर लेते हैं ना वर्ल्ड में, जैसे एज अ बिगनर सोल हमारा पूरा का पूरा पर्पस होता है प्लेजर सीख करना, ठीक है? एनिमल से सीधे हम अभी ह्यूमन सोल बने ही हैं. और मैं ये नहीं कह रही कि इवॉल्व सोल में प्लेजर सीकिंग नहीं होता है, उनमें भी काम होता है, बट जो परसेंटेज होता है ना काम का, वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अर्थ, धर्म एंड मोक्ष परसेंटेज, ठीक है? सब में लाइक एक एमालगमेशन होता है ये सारी चीज़ें चेज करने का, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर चेजिंग, राइट, दैट डिफाइंस यू. लाइक एक इवॉल्व्ड सोल में उनको मोक्ष पाने का ज़्यादा इच्छा होता है, ठीक है? लेट मी मूव टू अर्थ. अर्थ क्या होता है?
जब हम चेज़ करते हैं फेम, मनी, पावर, वर्ल्डली नॉलेज, तो वो अर्थ में आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा काम होता है ना, प्लेजर सीकिंग, वो कम करना होता है। जैसे इफ़ यू वांट टू गेट इनटू निफ्ट, आईआईटी, क्रैक यूपीएससी, व्हाट यू हैव टू डू, you have to kind of prepare for it. To prepare for it, you cannot be just going for movies, hanging out with your friends. You'll have to kind of turn down on all that pleasure seeking and then focus and work hard. Even to become famous, you have to, work hard towards it. To get a lot of money, you have to work hard towards it. अपना pleasure seeking पे थोड़ा कम करके, you have to work hard. फिर when you have had enough of money, fame, power, worldly knowledge, तुम्हें लगता है कि बस इसके बाद क्या, इससे ज़्यादा क्या, ये भी मुझे पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है. Is there something that can last longer? Then you get into dharma, selfless service, where you help others. ठीक है? बिकॉज ऑफ आर मिरर न्यूरॉन्स, जब हम दूसरे को हेल्प करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उन्हें स्माइल देते हैं, उन्हें किसी तरीके से हैप्पीनेस ब्रिंग करते हैं, तो हम भी वही हैप्पीनेस फील करते हैं. ठीक है? और बिकॉज ऑफ द सेल्फलेसनेस, जैसे अगर आप ऑर्फनेज गए और वहाँ पे आपने गिफ्ट्स बांटा, वहाँ पे अपना प्यार बांटा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो दैट एक्चुअली लास्ट लॉन्गर. यू विल फील हैप्पियर. अगर मैं आपको 1 साल बाद भी उसके बारे में पूछूं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस गोइंग टू ऑर्फनेज, यू विल ऑलवेज से कि हाँ, इट वाज रियली गुड. आई स्टिल काइंड ऑफ डिराइव सर्टेन अमाउंट ऑफ फुलफिलमेंट फ्रॉम इट इवन नाउ. बट दैट इज़ नॉट गुड इनफ. उसके बाद भी ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं कि ठीक है, ये कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है, काइंडनेस, कंपैशन फील होता है हार्ट में, एक अमाउंट ऑफ फुलफिलमेंट है, बट आई स्टिल वांट टू नो व्हाई आई एम हियर on this earth. What is my purpose? ये existence का purpose क्या है, वो question पूछते हैं हम. और ये पता है, ये आता तब है जब आपने बहुत अच्छे से बहुत सारा धर्म किया है, सेल्फलेस होके बहुत लोगों को हेल्प किया है, तभी आपने इतने मेरिट अक्यूमुलेट किए हैं कि वो मेरिट इस तरह से फ्लावर होता है कि आप में ये मुमुक्षत्व जगता है. ठीक है? और फिर एक बार मोक्ष वाला चीज़ आ जाता है. ये सेंस ऑफ सेपरेशन इज पार्ट ऑफ मुमुक्षत्व. ये जो विरह फील होता है ना भगवान से, सेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज पार्ट ऑफ मुमुक्षत्व टू. तो एक बार आप मुमुक्षत्व फील करने लगते हो, तो फिर इट इज सर्टन दिस लाइफ टाइम, जस्ट 2-3 लाइफ टाइम में यू विल गेट द नॉलेज एंड यू विल फाइंड गॉड. यू विल realize yourself. God realization and self realization, they are not different, they are the same thing. And yeah, I definitely resonate with what you're saying. And especially जैसे आजकल का यूथ, everybody, सब लोग सोशल मीडिया की वजह से सब लोग को लगता है कि what, इतने फॉलोअर्स आएंगे तब खुशी मिलेगी, इतना फेम मिलेगा तब खुशी मिलेगी. अब तो मोर देन एवर. पहले तो फिर भी यू हैड टू स्ट्रगल, एंड अभी भी, आई मीन, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर, बट सब लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं. एट दिस पॉइंट इट्स एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है. Of course, you knew Sushant personally, your sister. Sushant ने at least after reaching that point, जब success मिल गया, fame मिल गया, सब कुछ, money, everything, उसने कभी आपको बताया था the truth and क्या like not only about Bollywood life and the social structure and what बाहर से क्या है असलियत और अंदर से क्या truth है, but like how he felt. Yeah. उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता था, फॉलोवर्स, फैंस, कितना नंबर, ये सब नहीं. उसके लिए पता है क्या मैटर करता था? लव. इफ़ ही कुड शेयर द लव विद द अदर पर्सन, राइट? कनेक्टेडनेस. ही एक्चुअली यूज्ड टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी फैन, ईच एंड एवरी कॉमेंट ही वुड गेट ऑन Instagram. So he was that kind of person. What he was looking for in this world was connection and love. And actually we are all looking for that, because as Brahman, as Atma, we are all of this, right? It's just that we don't realize it. और हम वही connection और वही love feel करना चाहते हैं. जो भी कर रहे हैं हम, कोई भी action से वही चीज़ feel करना चाहते हैं.
होता क्या है कि उस प्रोसेस में we get a little caught up. We don't know exactly what we are doing. We have not introspected enough to see that what we are looking for is connection and what we are looking for is oneness. Once we realize that, then, then it's a beautiful realization. And I agree, definitely. जो आप बोल रहे थे कि he, मैं personally बता रहा हूँ आपको, there's something about like, there's a lot of actors, बहुत सारे actors हैं, बहुत सारे, celebrities हैं, but जो respect अभी तक fans करते हैं सुशांत भैया के, and till this day, there's so much, the movement itself, it's just so huge. I personally, at least from my point of view, like, जब भी मैंने उनको screen के ऊपर देखा था, I feel like I could feel his purity, and jab, the reason he was a role model for me and still is not because he's a successful actor. His innocence, his humanity, it's just something I could really resonate with. आपके point of view से आपको क्या लगता है जो भी success सुशांत भैया को मिली थी, उसके पीछे reason क्या था? It was simple. The reason was that he was a pure soul. राइट एंड जब आप सुशांत के आईज में भी देखते, उसका स्माइल देखते, आप देखते कि व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज अगेन कनेक्शन, अगेन लव, एंड ही वाज वेरी टैलेंटेड. सो एक्टिंग केम नेचुरली टू हिम एंड समहाउ ही हैड ऑलवेज बीन वेरी शाई ग्रोइंग अप. तो वो ये कैरेक्टर्स के पीछे छुप के वो चीज़ें बोल पाता था जो उसको बोलना था. So, yeah, that was another part. And he loved acting. He would have done it any which way, even if he was not getting paid for it. So he was acting because he wanted to be an actor. He wanted to give something out to the world. And मैं अपने like personal experience से बोल रहा हूँ, just like as an actor and singer myself, at least थोड़ा, and I know Sushant भैया वो भी spiritual. He was very spiritual as well in his essence. And when I got into spirituality, मुझे एक realization हुआ था कि even though I'm doing all these roles, right, and actor का job यही होता है कि किसी को entertainment देना, like is the point of acting, whether आप एक actor हो या आप एक singer हो, or any person in the artistic community, क्या आपका job सिर्फ entertainment करना है या जो role आप choose कर रहे हो उसके पीछे एक purpose होना चाहिए? Should there be a responsibility that every artist should have कि अगर मैं ये एक role निभा रहा हूँ तो मुझे एक पर्पस होना चाहिए कि ये करने से, इस प्रोडक्शन से, इस रोल से क्या अफेक्ट आएगा पब्लिक को? एकदम आप किस इंटेंशन से कौन रोल कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, और वो रोल का क्या इम्पैक्ट रहेगा पब्लिक पे वो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि देखो, आप जब मूवी देख रहे हो तो ये पूरा एक विजुअल क्रिएशन है. इट्स वेरी क्लोज टू हाउ वी लिव लाइफ, राइट? और जब आप ये देख रहे हो तो ये आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सब पे. आप एक डार्कनेस में हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, एंड यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग. योर माइंड गोज इनटू अ थीटा स्टेट व्हेन यू आर सीइंग मूवी. ठीक है, आप सारा कुछ अब्जॉर्ब कर लेते हो सबकॉन्शियसली. अब एज एक्टर्स, people need to be very intelligent that the kind of roles they are picking should have a positive impact on everyone. I feel like, we should have something like good flicks. I think there is something like good flicks, right? जहाँ पे spiritual movies बन रही हैं. मैं काफ़ी सारे ads देख रही थी इस movie के बारे में. There was this movie ना, रणबीर की, जो Animal, correct. Yeah, I don't know. वो सबको किस तरीके से इम्पैक्ट करी, किस तरह का विजुअल्स था उस मूवी का. और आजकल क्या होता है, यू जस्ट गेट एक्सपोज टू इट बिकॉज रील्स में आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं. किस तरह का इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो वर्ल्ड पे? हाँ, और ये जिन्होंने भी ये बनाया है उनमें
क्या वायलेंस था, कितना पेंट अप एंगर था which he is just taking out and putting it out there. You know, when I saw that, I felt so much pain. I was like, God, I have so much love for you, but इस तरह से मैं लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए. बट जिनमें इस तरह का एंगर है, ये इतने ह्यूज वे में इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है. यू नो, आई सॉ. तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि बॉलीवुड स्पिरिचुअल मूवीज़ बनाना शुरू करे और बहुत लोगों को डीपली पॉजिटिवली मूव करे और स्पिरिचुअल ग्राउंड पे आगे अग्रसर करे. नहीं, I definitely agree with that. And it's like, and it's both easily ये हो भी सकता है. Like spiritual movies, it doesn't have to be only like about specific kind of philosophies and terminology and stuff like that. Because directing, acting, it's a creative process. Both आसानी से you can incorporate spiritual themes into movies that make sure positivity आती है. And I agree with you. मैंने तो actually पूरी annual movie देखी भी नहीं है, but it's because of social media. इतने reels देखते हो and everything. And it's like, technically, if you ask कोई भी acting professor को पूछो and New York में or anything like that, they'll be like, oh no, he did a great job. He gave 100% to his role. And that is true. Maybe the acting kind of aspect is there. But like because of social media and now more than ever, what happens is कि like even अगर role negative है, तो for example, I think it was there's a Bobby Deol played this role and there was like this one thing that went viral. It was like he looks at the camera and goes like this and then he calls and like and he just abuses all these women and everything. And that one scene went so viral on reels कि सब लोग उसके ऊपर reels बना रहे थे. And like now it's like millions of reels just made on that one song and thing, and people reenacting, people pretending to be Bobby Deol and doing that scene, which and it was connected to some song or something, I think, and वो लोग scene कर रहे थे, and that same exact scene, which literally just showing him abusing multiple wives, physically abusing, sexually abusing, and all that stuff. So not that I'm not against like the industry or something like that. I'm not flat out saying. I just personally, this is like my personal thing as an artist. मैं personally चाहता हूँ कि movies थोड़े से spiritual होएं, because there is that aspect कि बहुत ही easily because of social media negativity spread हो सकती है. हाँ, और क्या impact होगा movie on others? देखो तुम, you can play a good role, that's fine, totally fine, but you have to think about the impact it will have on public. Yeah. That's true. है ना, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? आप एक्चुअली बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो, आप कितनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तो किस तरह के रोल्स आपको पिक करना चाहिए? नहीं, एग्री. एंड बिलीव इट और नॉट, बहुत सब ये जो अब ट्रेंड भी आया है वायलेंस और मोर डार्कर मूवीज़ का बॉलीवुड में, यूएस से ही आ रहा है, वेस्ट से ही आ रहा है. बिकॉज ये लोग मेरी मॉम ने इतने सारे मुझे पुराने ज़माने की मूवीज़ दिखाए हैं बॉलीवुड के, 2 आंखें 12 हाथ, stuff like that. And like there's such beautiful meaning hidden beneath it. But क्या होता है, like, and I'm not saying that I'm against Martin Scorsese, but because people like every movie has mobs in it, drugs dealing, violence. So धीरे धीरे you like, okay, artistic satisfaction के लिए people try to do it. But no, I definitely agree. और क्या पता अंदर कुछ इस तरह का है जो निकाल रहे हैं बाहर, राइट? देखो, अगर तुम्हारे कप में कॉफी है और उसमें कुछ गिरा, कुछ थिंग गिर जाता है, तो कॉफी ही निकलेगा बाहर. तुम्हारे कप में अगर नेक्टर है, अमृत है, तो उसमें कुछ गिरता है तो अमृत ही निकलेगा बाहर. ठीक है, तुम्हारे इसमें पानी है तो पानी निकलेगा बाहर. वॉट एवर यू हैव इन योर कप, दैट विल कम आउट. एज सिंपल एज दैट. तो तुम अगर प्योर हो, तुम अगर सेल्फलेस हो, और तुम अगर बिलीव करते हो अनकंडीशनल लव में, सबको लव करने में, तो तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा. तुम ये नहीं निकाल सकते हो, वायलेंस नहीं निकाल सकते हो जस्ट फॉर फन ऑफ इट. You know, it will not come out. तुम try भी करो, फिर भी नहीं आ पाएगा. And अब तो, I mean, now that we're talking about violence, death तो एक बहुत ही popular topic हो गया, especially in the science community. आजकल तो like अगर आप like both, whether it's reels या YouTube के ऊपर videos, cryogenics, the aspect of continuing your life after death, इतना popular हो गया. All these wealthy people there, and I was talking to this with the podcast of Swami ji as well, Sarvapriyananda ji, about cryogenics and what he thinks about it. And not only कि अगर possible भी है, but if people are doing it, is it even ethical? Should it even be done? Should you be freezing yourself in the hopes कि okay, maybe a couple years later, अगर मेरे पास अभी इस वक्त में कोई illness है, then maybe if I freeze myself for decades or like hundreds of years or something, उस time पे cancer का cure आ जाएगा and I can be cured. Yeah, imagine what you're trying to extend. किस चीज़ को extend करने की कोशिश है? इस physical body को,
हाँ, इस मेंटल सेटअप को, अपने ईगो सेल्फ को किसी तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश है। क्यों? आर यू रियली हैप्पी विद इट? इज इट गिविंग यू हैप्पीनेस प्लेइंग दिस रोल? अपने आप से पूछना चाहिए ना ये सब, राइट? Yeah. तो या I wanted to ask you, आपके पास इतने experiences already आ गए हैं through meditation, through sadhana. ये जो reality है, is it even true? इट इज़ लाइक अ ड्रीम, जस्ट अ लॉन्गर ड्रीम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, हम सेंसेस सारा टेक इन कर रहा है, परसेप्शन हो रहा है, लाइट तुम पे पड़ रहा है, जो भी लाइट सक नहीं हो पा रहा है, होता क्या है ना, इफ आई सी यू इन सर्टन कलर, राइट, दैट ग्रीन, ओके, सो द विजिबल रेज आर फॉलिंग देयर ऑन इट, everything else is being absorbed, all the other rays are being absorbed, और जो वो absorb नहीं कर पा रहा है, it is reflecting that, and that is the color in which it is appearing. तो ग्रीन हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रीन वो absorb नहीं कर पा रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब वो ये जो फोटोन है ये ट्रैवल करता है और हमारे रेटिने पे रिफ्रैक्ट होके उल्टा इमेज बनता है, फिर वो हम कैसे प्रोसेस करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह से वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, एंड देन वी इंटरप्रेट इट. So what we are seeing is not the world outside, we are seeing the interpretation of it, a copy of it in our own head. Actually our brain is completely dark inside, no light. Imagine a candle burning right now over here, flame. वो flame actually हमारे अंदर नहीं जा रहा है, it is not lighting up the brain, our neurons, okay? But what we are, the lighted candle we are seeing, we are actually seeing it inside our dark brain in the visual cortex. So isn't that very interesting that we are not experiencing the world outside, we are actually experiencing the world within our own brain, and that is the truth. That is the truth. Similarly, जैसे आप ड्रीम में होते हो, आप कुछ सोचो कि आप प्लेन फ्लाई कर रहे हो, एकदम आपको फीलिंग होता है कि अच्छा प्लेन फ्लाई कर रहा है, अभी इस तरह से रखना है, क्रैश नहीं करना चाहिए, ऑल दैट यू आर फीलिंग, राइट? उस समय बहुत एफर्ट भी लगा रहे हो, टच कर रहे हो प्लेन को, स्टीयरिंग को, व्हाटएवर को, राइट? वो सब तुम्हें फील हो रहा है। अब वो रियली में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? इट इज हैपनिंग ऑन सर्टन लेवल, बट इट इज हैपनिंग इनसाइड योर ओन ब्रेन, ठीक है? ये भी उसी तरीके का है। इट इज़ अ ड्रीम दैट वी आर लिविंग, और इस ड्रीम में ये क्यों हमें इस तरह से समझना है, इज बिकॉज इस ड्रीम में अगर हम हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करने लगते हैं ना, तो इट्स लाइक चेजिंग अ मिराज। वी आर चेजिंग अ मिराज। वो कभी कभी नहीं होना है, क्योंकि वो आपको क्वेंच कर ही नहीं सकता है। इट इज़ व्हेन यू विल सिट विथ योरसेल्फ इन मेडिटेशन, and when you forget about this dream and you go deep inside and search for happiness and ask real relevant question, who am I, what is all these, why am I here, what is the purpose, let me know God. Just ask and sit for the answer. Don't be distracted, don't be in a hurry, don't think that it will not work. Have faith, sit with it, and then see the miracle, because that's what you are in reality. So it has to come up. There is no other way. Yeah. And this spiritual knowledge, it changes everything. I think it was the American Psychology Association or something, and I think even Swami Sarabhinanand ji इसके बारे में बात कर रहे थे कि like even if आप believe नहीं करते वेदांता के बारे में और spirituality, and you don't believe on this in the scriptures, आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते कि जिनके पास ये ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल है, जो साधना कर रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी में डाइव डीप कर रहा है, उसके चांसेस नॉट ओनली स्टेटिस्टिकली प्रूवन कि वो डिप्रेशन में कम जाएगा और बहुत ईजिली डिप्रेशन से निकल सकता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सुसाइड रेट्स भी कम चांसेस है। एंड आजकल के जैसे लाइक टाइम पे लाइक सुसाइड रेट्स आर ओनली इंक्रीजिंग, mental illnesses is only increasing.
what would you say, like how important is it कि जो भी अभी viewers अभी ये video को देख रहे हैं, and आजकल तो people are very skeptical, very agnostic, people are asking so many questions, and they're wondering that, okay, fine, maybe, if you see so many videos online, and you know what, I don't believe in God, I don't believe in this, no bhakti for me, but yeah, maybe koi sachai hai, spirituality, I can be spiritual. So what would you say to them? I would not say anything to them. I would tell them, go whatever you think you want to do in life, do it. Test it, live it, see what it brings you. देखो, तुम जो एक पर्सन होता है ना जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गया है कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आस्किंग द डीपर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, उनको तुमको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी करो, देखो, समझो. उनके अंदर से पहले से ये क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है. और अगर तुमको कन्विंस करना पड़ रहा है किसी को, तो you rather not, okay? Don't convince them. let them see it. अगर कोई बच्चा है, वो टॉय से खेल रहा है, उसको जॉय मिल रहा है, तो let him play. एक टाइम खुद ही ऐसा आएगा कि वो बोलेगा नहीं, बहुत हो गया गेम, अब मुझे कुछ और करना है. और मुझे पहले के टाइम में it was so very clear. This Vedanta or spiritual teachings were not given to everybody. Till the time you are not ready for it, like you have to have Vivek, Vairagya, Shamadama Adi Shat Sampatti, and Mumukshatva. Mumukshatva being the main thing. जब तक तुम में वो तड़प नहीं है ना भगवान के लिए, तुमको दे भी अगर कोई देगा ना, तो तुम उसका कुछ नहीं करोगे. You'll just leave it. You'll be like, हाँ, it's another thing. इसीलिए पहले तुमको अपनी कैपेबिलिटी शो करनी पड़ती थी गुरु को कि आर यू केपेबल इनफ. बुद्धिज़्म में तो लोग अपना, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हु ही वाज, बट उन्होंने अपना आर्म्स तक काट के दे दिया था कि आई एम दैट डिवोटेड, आई रियली वांट टू नो. इस तरह से अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि यू आर एन अधिकारी टू रिसीव दिस काइंड ऑफ नॉलेज. इतना तड़प होना चाहिए अंदर. और अगर उस तरह का तड़प नहीं है ना, तो देने का कोई फायदा नहीं है. एंड आपको क्या लगता है, पेन और जो सफरिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में? बिकॉज एटलीस्ट इवन फॉर मी, बट मेरी मॉम को भी, my mom got into her spiritual state a little bit later in her life. Like in a lot of the suffering that she went through, personal life journey, betrayals, etc., so many things happened in her life that allowed her to get into that state where she started asking questions and said, like, this can't be the ultimate truth. आपके point of view में क्या एक suffering catalyst है spirituality के लिए? Of course. No suffering, no pain, no gain. No pain, no gain. और मुझे लगता है ये जो डिज़ाइन है ना, as I told before, it is not by accident, it's by design. This design has to fail so that we can ask deeper question. हम क्यों ही fail करते हैं किसी भी चीज़ में? The more successful we become, we feel more hollow inside. Why? Why does that happen? Because what we are chasing is not real. Whatever we are chasing outside is not real. That's why. It has to fail. और जब फेल करता है तो सफरिंग होती है, डिज़ायर होता है. देखो हम लोग क्या चेज़ कर रहे हैं, डिज़ायर्स, डिफरेंट डिज़ायर्स, ठीक है. हाँ, ये चाहिए, ये हो जाना चाहिए, मुझे इस बंदी से शादी करनी है, ये मेरा लवर है, ये चाहिए. अगर वो लवर मिल भी जाता है तो क्या फिर फियर होगा उसको लूज करने का, राइट? तो ये तो हमेशा ही रहेगा. और जब लूज होगा तो फिर पेन होगा. तो इट्स लाइक अ डीप रेस्टलेसनेस दैट विल नॉट लीव यू. इस माया में वो रेस्टलेसनेस हमेशा ही रहेगा किसी भी एस्पेक्ट में. सो Maya has to fail so that we can ask deeper question and go inside and find God, find yourself. And that I feel is self-actualization. That I feel is
becoming superhuman, and that is where we are going. Evolution में animal से पहले human, फिर superhuman, and superhuman जब आप बनते हो, superhuman, I don't feel like calling it superhuman. You are becoming yourself. You are becoming godlike. That's what you are in reality. You are God. You are becoming godlike. And when that happens, when you start feeling the oneness, then everything, like all the siddhis start to manifest in you, because you have kind of भूत शुद्धि हो जाती है. भूत जो 5 भूत से हम बने हुए हैं वो शुद्ध हो जाता है. शुद्ध होने से क्या होता है, सिद्धियां अपने आप ही प्रकट होती हैं. You don't have to work on it, and nor do you have to get attached to it, but you will see that will start happening, and it will be very common for you when you are on the path. Honey, having siddhi should not be the goal. Just like because a lot of people there's some videos and बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं इनके बारे में कि like a lot of yogis, they could fly, yogic flying, etc. But you're saying कि siddhi's goal नहीं होनी चाहिए. Your goal should be self-realization, and in the process अगर उस टाइम पे आपको सिद्धीज आए, then that's fine, but it should not be the goal. Of course. और पता है सिद्धीज क्या हेल्प करते हैं? तो हम लोग जैसे माया को अल्टीमेट समझते हैं, इसके लॉज ब्रेक नहीं हो सकते. ठीक है, ये सॉलिड है, ये वहाँ से उड़ नहीं सकता, ये हम मानते हैं ना. बट जब सिद्धीज आ जाते हैं और ऐसी सी चीज़ें होने लगती हैं, तो माया तुम्हारे सामने ब्रेक डाउन कर रही है. तो तुम्हारे को जो इस पे इतना ज़्यादा फेथ है ना माया पे, दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट स्टार्ट्स टू ब्रेक. वो फेथ डगमगा जाता है, तो तुमको समझ में आता है कि नहीं, इट्स नॉट फॉर रियल. जैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग में व्हेन यू बिकम अ लिटिल अवेयर, तो तुम अगर नाइटमेयर देख रहे हो या कुछ देख रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम उसको चेंज कर सकते हो ना, बिकॉज यू आर लिटिल अवेयर. एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग waking state also. When you become a little aware, you can tweak things, Yeah. So beautifully said. It reminded me of what my Guru Neem Karoli Babaji said. He said, and he had all these siddhis, he was a saint and everything, but he always said one thing, and he says, love all, serve all. And and you know what? Love all, serve all, such a good lesson. But this what happens when you are in that state of oneness. This is how you express yourself. और वो इसलिए ये guidance दिए हैं क्योंकि because that is your true nature. So when you start doing things like that, you become your real self. Yes, that is your true nature. So beautifully said. इतना अच्छा लगा आपसे बात करके. Likewise, thank you so much, Shweta ma'am. Thank you so much, Sharon. Hey everyone, thank you so much for watching this video all the way till the end. Your support means a lot to us. Do like, share, and subscribe to the channel, and do comment below who you'd like next on the show. See you soon.